वो उनके साथी और उनकी जो टीम है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। का एक बार आप लोगों ने सुना था, जिस तरह से उन्होंने बताया था शुरू में जब कई सारे कार्यक्रमों में आप जुड़े थे, कि ऑडिट रिपोर्ट की स्क्रूटनी करना और उससे कुछ इस तरह से फोर्स करना, कार्यां सामने आए और उससे कुछ इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट निकाल करके उस पर कार्यवाही करवाना, इस तरह से आपने बहुत ऐसे मतलब जो करप्शन है उसको आपने उजागर किए हुए हैं और आपकी टीम ने। तो स्वागत है सर आपका Thank you very कार्यक्रम much. में। और Thank you. अब Thank you. आप, हाँ, आमंत्रित करेंगे आपको कि अब आप इस कार्यक्रम में अपना जो भी विचार है कृपया आप रखें। तो सर अब आज सेक्शन 9 के विषय में चर्चा करनी है। तो कॉपीराइट Yes. से संबंधित, हाँ, कॉपीराइट से संबंधित क्या इशूज हो सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इशूज रिलेटिंग दिस कॉपीराइट्स, एंड द इंफॉर्मेशन सीकर can I mean apply for this information, and why they deny copyrights issues, and are there some sort of like differentiation between the copyrights, whether some information could be given and some other information could not be Yes. given. So we talk about all that. जी please. Okay. ये सेक्शन 9 का बहुत सीमित उपयोग हो रहा है. It has got a very limited applicability on the RTI Act itself is here. Recording in progress. In the initial stage, we have made a lot of there were a lot of applications relating to that section 9 before the Information Commission here. Even the people started making application to the Central Board of Certification, which issues certificate to the films are concerned here. जो film है ना, initially some RTI applicants made application to the Central Board of Certification, that is censor board, and sought the information, the copies of the films unedited by the original footage of the film submitted to them for the certification and all here. Initially, when it was in somewhere in 2006-7, the lot of applications were made to the censor board here. So basing on the section 9, they invoked the provision under section 9 and rejected the application, stating that it comes under the provisions of section 9 of the Act, and where the section very clearly says, without prejudice to the provision of section 8, a central public information officer or a state public information officer, as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the state. That means if they provide the footage of the entire film, it will infringe the right of the producer, or the distributor and all here. So PIOs took a stand that information relating to the footage of the films submitted for getting the censor certificate were rejected by the public information officer of the censor board here. And it was challenged before some of the Central Information Commission. I think that 1 or 2 cases were there here. Even the Central Information Commission also upheld the orders of the public information officer. So now it is a rule that we cannot seek the information relating to the films, copies of the films submitted to the censor board here. That is one thing is here. The second question came before the Information Commission. So here, this one, libraries are holding or purchasing the books from the authors here. Even in the books, it will be clearly written that the publisher or the author reserves the right, copyright here. It will be clearly mentioned in the book here. So even the libraries also, they rejected the certified copies of the books held by them. Libraries, public libraries, the public. So books are the documents, whether it can be given or not. Even the Information Commission said that even the copies of the books held in the libraries cannot be provided under the RTI Act here. The third one is the medicines, the patents. The medicines
that they have to get the permission from the drug controller or by the respective states. They have to obtain permission from the controller of drugs of the respective states for manufacturing and selling of these medicines or consent here. So at the time of making application, they are supposed to give the formula used for that manufactured formula can be accessed under the RTI Act. This is a question here. Many applications were made and it was rightly rejected by the PAOs that invoking the provision 9 of the Act here. So the issue is very clear here that wherever the patent law or the copyright law is applicable on that particular document or the information held by the public authority, so citizen cannot have access to such informations here. And now the recently and here, we are making a lot of applications to the public works departments wherever the big projects are going on, especially flyovers, then bridges will be there here, huge buildings are there here. Whether the information, the plan of such buildings or such project, that flyovers or bridges or the buildings, big projects can be accessed under the RTI Act here. The information, the PIOs normally they took a stand that even the plans, that is the technical plans submitted by the contractors or by the owners of the buildings for that particular building or the particular bridges is accessible under the RTI Act is a question here. Some of the public information officers, they sought the opinion that under section 11, they sought the opinion of the contractors who have submitted those plans, and here they have rejected some of the information citing under section 9 of the Act here. But the Karnataka information held that whenever a bridge or a flyover is being built by the contractors and the plans, the technical drawings supplied by such contractors to the government for building that particular bridge or a flyover is a public document and it has to be given to the public here. Even similarly, applications were made to the Bangalore Metro seeking the technical drawings of the railway line, the metro railway line. Earlier it was rejected, but finally on the intervention of the Karnataka Information Commission, even such informations are now accessible to the public here. So if the plans submitted by the architects for building, even for the private buildings, with the municipal authorities, they are the municipal authorities or the competent authority for sanction of building plans for these apartments and all here. Whether such plans are accessible under the RTI Act, whether the section 9 can be made, is applicable to withhold the information was a question here. But now the rule is very clear. Whoever submits any plan for building of the houses, sanctioned to secure the sanctioned plan from the municipal authorities, either for apartments or any construction is concerned here. So they are all public documents, and there this applicability of the copyright or patent does not hold good here. These are the important aspects of section 9 here. So only thing is the law is very clear that the books held by the public libraries or not the public documents, and authors will have the right to have the copyright here. It amounts to the infringement of the copyright. So such information cannot be accessed under the RTI Act here. Even likewise the medicines, but here in medicines, that formula that will be whatever the submit to the controller of drugs will have a limited period. I think it is about 5 years or 10 years here. Once that period is over, that document becomes a public document, and anybody can access to the formula of that particular medicine here, even under the RTI Act here. So I think the area is very limited, and hardly a few cases have come up before the Karnataka Information Commission regarding the section 9 is concerned here. So I think there is no much gray area and there is no much confusion in these things here. I think this is my opinion, and what we have made studies or what analyzing the Information Commission orders and here. And these are the highlights and of the importance of the section 9 under RTI Act.
So thank you, Shivan ji. सर आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके। हाँ ठीक है, धन्यवाद बीरेश जी को धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी आप सभी को, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यदि किसी दवाई से संबंधित फार्मूला यदि आप मांग रहे हैं या किसी बिल्डिंग के जो प्लान है वो यदि आप चाह रहे हैं इस तरह से, तो ये चीजें कॉपीराइट इशू के तहत संरक्षित होती हैं और वो नहीं दी जाती हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद में फिर वो दी जाती है। जैसे आपने बताया कि जिस तरह से 8-10 साल का उसका अपना पीरियड होता है दवा से संबंधित। पब्लिक लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों के विषय में भी उन्होंने आपको जानकारी दी कि किस तरह से कॉपीराइट्स के तहत का एक लिमिटेड वो रहता है। और इस विषय पे और भी अपन चर्चा करेंगे। आप लोग प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके। हमारे बीच में आत्मदीप सर भी जुड़ चुके हैं। आत्मदीप सर, स्वागत है। और यदि आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो फिर इस विषय पर आपके जो अपने अनुभव रहे हैं, आप एक सूचना आयुक्त के तौर पर आपने काम किया है, तो जाहिर है कि इस तरह के जो इश्यूज हैं प्रैक्टिकली आपने काफ़ी डील किए हुए हैं। तो जब आरटीआई में ये बात आती थी कि सेक्शन 9 का कहाँ वायलेशन हो रहा है, कैसे जानकारी आवेदक को उपलब्ध करवाई जानी है, अपीलार्थी को, अथवा नहीं उपलब्ध करवाई जानी है, उस स्थिति में आप एज ए सूचना आयुक्त के तौर पर किस प्रकार इसका निराकरण आप करते थे, निर्धारण आप करते थे? और कुछ यदि आपके कार्यकाल के दौरान यदि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय आए हुए हैं जिसमें इन इश्यूज को लेकर के चर्चा हुई और आपने उसमें कुछ डिसीजन दिए, तो कृपया उसके विषय में भी अवगत कराएं। आप सर सुन पा रहे हैं अपने आप को? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हालांकि हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। आज का विषय बहुत अच्छा है। हम 5-7 मिनट बाद आपको ज्वाइन करते हैं ना, वीडियो ऑन कर देंगे। बिल्कुल, तब तक हाँ जी। तो जब तक 5-7 मिनट 10 मिनट आमदीप सर तैयारी करते हैं, ज्वाइन करने के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी हमारे उत्तराखंड से आरटीआई रिसोर्स पर्सन, और इस कार्यक्रम में हमेशा ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, तो वीरेंद्र जी को ने भी हैंड रेज भी किया हुआ है। हम उनको यहाँ पे इन्वाइट करेंगे। वो इस विषय पर अपने जो भी बातें हैं वो यहाँ पर रखें। उनका भी एक अच्छा खासा अनुभव रहा है, काफ़ी समय तक उन्होंने काम किया है आरटीआई रिसोर्स पर्सन के तौर पे। बहुत सारे मामले ऐसे डील किए हुए हैं, तो उनके भी मतलब जब उन्होंने काम किया तो उनके समय में भी ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई होंगी जिसके विषय में उनके अपने अनुभव होंगे, महत्वपूर्ण कुछ निर्णय रहे होंगे। तो उनके पास तो विशेष तौर पर निर्णयों का एक अपना भंडार रहता है हर तरह से, तो उस पर भी वो अपना प्रकाश डालेंगे। तो बीरेन जी, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद शिवानंद जी। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेक्शन 9 जो है, और इसमें मेरे कार्य को मैंने जो 700 केसेस देखे उसमें कोई ऐसा सेक्शन 9 मुझे इन्वोक कहीं करना नहीं पड़ा। लेकिन एक मेरे 2 क्वेश्चन है वीरेश बिल्लूर साहब से। सो मे आई आस्क दोस क्वेश्चंस? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। Sir, I have 2 questions, 2 points to make regarding this question about section 9. Yeah. Actually, I am a criminal lawyer also and RTI resource person of Uttarakhand Information Commission. Yes. At present, I am teaching as assistant professor in computer science and engineering in GB Pant Institute of Engineering and Technology. I am also teaching this cyber law and ethics, which also includes intellectual property rights. As far as section 8(1)(d) and section 9 are concerned, so section 9 mentions only about copyright, while section 8(1)(d) includes all types of intellectual property rights. So I think there is some overlap, because one case that you narrated about section 9, so I think patent does not come under section 9, but rather it should come under 8(1)(d).
Secondly, another important point is copyright subsisting in a state is not protected. That means only the copyrights of private persons are protected under Section 9. If the copyright is with the government, then the government can only charge the price of the publications, and the copyrights of the government authorities or public authorities are not protected under the RTI Act. Yes. So I think these are two important points, that is 8(1)(d) and copyright subsisting in a state. So Yes, what are your yes. comments on this, sir? That Section 9, it is very clear. It says that if you read the Section 9, it clearly says that the request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the states here. Yes, sir. Yes, sir. That's that Section 9 is very clear here. Government cannot claim the copyright here. Whatever the information they are having, they have to give it to the government. All government publications that they are the public documents here according to this section. So if you read the section 9 itself very clearly says that the information held by the information related to the government cannot claim any exemption under Section 9 of the Act here. All government publications or public documents here, and the projects there, the detailed project reports or public documents here. So I think there is no much interpretation, cannot make any interpretation. There is no much confusion among the Section 8.b and Section 9 is concerned. But patent I think would come under 8.d rather than Section 9, because Section 9 is only copyright. While Section 8.d covers all types of exemptions. Recording stopped. Yes. That is Recording 8.d in is very progress. exhaustive. Yes. Yes, Section that is 8.d is very exhaustive. Yes. Even this, So I think, medicines, patents of medicines come under 8.d. Rather than in Section 9 is concerned here. Yes. Yes, sir. You're right. Yes. Yes. Thank you so much, sir. तो जिस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रश्न में वीरेंद्र जी ने जो बातें पूछी वीरेश सर से, उन्होंने सेक्शन 9 के तहत दवाइयों के विषय में जानकारी जो फार्मूले हैं उसको उन्होंने बताया था, लेकिन वो बता रहे हैं कि 8.1d के तहत ये कवर होता है, पैटेंट के इश्यूज हैं, सेक्शन 9 के तहत नहीं कवर होता है। इसी तरह से आप लोगों के अभी जो प्रश्न है आप लोग पूछते हैं, लोग प्रश्न हिंदी में पूछ सकते हैं, वो आपके प्रश्न का जवाब देंगे और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत थोड़ा सा ये है कि वीरेश जी का थोड़ा सा हिंदी उतना फ्लुएंट नहीं है, क्योंकि वो कर्नाटक से हैं, उतना ज्यादा वो नहीं रहता है साउथ में, तो आप लोग अपनी बात फिर भी पूछ सकते हैं, वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। गोरडे जी हैं, गोरडे जी तब तक आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, पूछना था। सर बोले कि लाइब्रेरी का जो बुक्स वगैरह है, ओके, वो के अंदर नहीं है, मतलब वो है, हाँ, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं तो राइट टू इंस्पेक्शन ऐसा ही होगा, है ना? तो मेरा सवाल है कि मतलब जब यदि बच्चे लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने परचेस किया है, लाइब्रेरी में वो पढ़ रहे हैं, तो ये अलाउड है कि नहीं लीगली? सेकंडली, कुछ लाइब्रेरी में जेरॉक्स कॉपी दी जाती है कुछ पेजेस की, तो देना लीगल है कि नहीं है? No, it's wrong here. They are not supposed to get the copyright says the act very clearly says here, even it cannot be copied in any manner here. Even that act is very stringent. Even you cannot take the copy it even in handwriting as it is here. But practically it is not possible. If you borrow a book from the library here, if you take it home and take a Xerox or make a, you can scan the certain pages and keep it with you. Even though it's an infringement, that prosecution or implementation cannot be done here. Practically, it is not possible. But only this law restricts only the public authorities from providing the either the Xerox copies or scanned copy of that book here. The implementation is very, very difficult. This under Section 9 is copyright is concerned. Sir, but there is concept of fair use in Copyright Act. I would like to intervene here. Actually, there are two use. One is fair use, another is commercial use. So when somebody uses it for study or research purpose, then that is not considered as infringement, because it is comes under exemption of fair use under Copyright Act. And if it is done for commercial benefit, then only it comes as commercial use and infringement. So there is protection for this fair use as far as, because there are even reprographic services in libraries. And if somebody is just copying, say, doing it only for study or research, then generally that comes under exemption, and therefore there is no legal action in such cases. Even in research, he can copy it and he can quote it. But
you have to credit, put origin, that is the original author, you have to acknowledge it in your yes, otherwise it amounts to plagiarism. Yes, Sahitya Chori now, Sahitya Chori mein na hai, so the original sources have to be quoted and citation has to be given. Yes, that is correct. Yes, and another thing is we are getting is piracy of these films and all here. Yes, yes. That piracy is also there. It's of Copyright Act here, but hardly they are processed. The implementation is highly impossible here. But one thing is, public authorities are not supposed to violate these laws. That is the main intention of Section 8 or Section 9 is such here. But I want to say that when public authority has purchased the books, yes, paid the amount, and when it is for the public to have access, okay, at that time, if public wants 1 or 2 pages for reference purpose or court issues, they need to get permission of the author. Yes, that is what's here. You cannot use it for the commercial purposes. Yes, correct. And you cannot use it for, otherwise you can use it for any other purpose, other than for commercial purposes. And suppose if you want to use a particular paragraph or the particular thing in the verbatim as it is, then you have to acknowledge the original. That is the thing here. That is the thing. Okay, thank you. आप लोगों के और भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ये बात समझ में आई होगी। I am not a legal expert on this issue here, but only I can speak only about the RTI Act under these. Simply whatever experience you have and knowledge that you can give, and here many people are not just concerned about too much legality, only some sort of like surface information that they don't actually have. So मैं यहाँ पे लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करूँगा कि आप लोग अपनी बात पूछ सकते हैं। एक चीज यहाँ पर आपने देखी है किस तरह से बीएस ने और बीएस की चर्चा में ये बात सामने आई है। सामान्य तौर पर हम किताब की कोई लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी से वो कॉपी मांगते हैं, हमें कहते हैं आते हैं हमें इस पुस्तक की आप प्रमाणित प्रति दीजिए, तो वो नहीं दे सकते क्योंकि वो पब्लिक की तरफ आता है। लेकिन सामान्य तौर पर मतलब हम स्टूडेंट या सबसे पहले हम लोग उपयोग करते हैं कोई किताब, कहीं से कोई चीज उठाते हैं, कोई आर्टिकल का पार्ट उठाते हैं, उसमें साइटेशन देना आवश्यक है। ये चीज यहाँ से उठाई है, फला पुस्तक के फला पेश मांग करके फला यहाँ से ले रहे हैं, तो वो उनका वारिस नहीं होता है, वो प्लेगियरिज्म के तहत नहीं होता है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है। और दूसरी बात यही चीज सामने आई है, अक्सर होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि फोटोकॉपी की दुकान पे जाकर ये बोलते हैं कि फलाना किताब हमें कॉपी दे दो, तो किताब आती है फॉर एग्जाम्पल पता चला कोई इंटरनेशनल एडिशन है और वो आई 10,000 रुपए की, यानी 100 यूरो की आ रही है। 100 यूरो की किताब, 100 यूरो की किताब हम खरीदने जाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अक्सर ये होता है हमारे लोग पढ़ाई के कार्यकाल में लोग बिल्कुल क्लियर सभी लोग करते हैं, मतलब उस किताब का पार्ट हम अपना या पूरी किताबी फोटोकॉपी का पार्ट हम किताबों को लाइब्रेरी में रख लेते हैं। हालांकि अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब कमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए। कमर्शियल यूज से मतलब बना करके आप इसको बेच रहे हैं, आपसे पैसा कमाने को करते हैं, लेकिन एकेडमिक पर्पस के लिए लिमिटेड मतलब उसका बात कर सकते हैं। ये नहीं होता है मतलब एकेडमिक यूज कर रहे हैं और दूसरा आप साइटेशन देते हैं, उसकी परमिशन प्रोवाइड करते हैं, हमने हासिल की हुई है, वो आप उसको छतन जस्टिफाइड है, हालांकि लीगल नहीं कर सकते, ये जस्टिफाइड है। ये बात क्लियर है। किसी पब्लिक लाइब्रेरी से ऐसी जगह से हम किताब की मतलब पूरी फोटो कॉपी मांग सकते हैं, अटेस्ट कॉपी उसकी मांग सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं, ये मतलब इसके अंदर आपका लिमिटेड होता है, मतलब जब से मतलब नहीं लगा ये देखो। तो इसी पूरी तरह से आप लोगों को रखने की आवश्यकता है और हम देख सकते हैं हम शॉर्ट करके और आपको डिस्क्रिप्शन में नमस्कार सभी साथियों को। आज का विषय वाकई ऐसा महत्वपूर्ण है और इस कॉपीराइट के संबंध में हमें से ज्यादा लोगों को कमी जानकारी होती है, तो शिवानी जी धन्यवाद कि ये विषय आज के वेबिनार में चुना। भाई मेरे पहलू जी और साहब ने उनके सवालों के जवाब में बहुत अच्छी जानकारी इस बारे में आई। हम सामान्य व्यक्ति को कॉपीराइट के बारे में सब कुछ बहुत थोड़े समझ में आ सके, उसके हिसाब से कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बात तो शिवानी जी ने कही थी कि सूचना आयोग के रहते 5 साल के कार्यकाल में हमारे सामने कॉपीराइट से संबंधित एक भी प्रकरण नहीं आया और आमतौर पर आते भी नहीं, लेकिन फिर भी हमको कॉपीराइट के बारे में जाना आवश्यक है। आरटीआई की धारा 8 में भी कॉपीराइट का उल्लेख इस कारण से किया गया है। धारा 9 में इस प्रावधान किया गया है, आरटीआई धारा 9 के प्रावधान में कि धारा 8 के प्रावधानों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचना के आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगा जिस सूचना से राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के मौजूदा प्रतिलिपि अधिकार, कॉपीराइट को हिंदी में प्रतिलिपि का अधिकार कहा गया है, प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन होता है। अब इसमें राज्य का कॉपीराइट शामिल, राज्य आमतौर पर कॉपीराइट लेयर नहीं है क्योंकि राज्य तो शासन की तो सारी जानकारियां ही लोगों को बताने के लिए होती है। तो इसमें राज्य की नहीं, केवल व्यक्ति के कॉपीराइट की बात है। इस व्यक्ति का जिस चीज पे कॉपीराइट है उसकी जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है। इसलिए भारत की संसद ने ये पूरे देश के लिए लागू कानून है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 में पारित किया था हमारी संसद ने और पूरे देश में इसको लागू किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य कॉपीराइट के मूल स्वामी को बेईमानी से की जाने वाली नकल से बचाना, उसकी रक्षा करना और अवैध लाभ प्राप्त करने की मंशा पर रोक लगाना। पेटेंट और ट्रेडमार्क ये अलग, वो कॉपीराइट एक्ट में नहीं गवर्न होते हैं। कॉपीराइट किन मामलों से जो लोग जुड़े हैं, जिन जो कॉपीराइट लेते हैं, जैसे लेखक, प्रकाशक और अन्य रचनाकार और उपभोक्ता, इन सबके हितों के बीच संतुलन कायम करने के लिए एक लाया गया है। कॉपीराइट के तहत मूल सृजनकर्ता को या मूल रचनाकार को अपने कंटेंट यानी अपनी सामग्री में फेरबदल करने का, उसका पुनः उत्पादन करने का, प्रकाशित करने का, प्रसारित करने का, अनुवाद करने का, जनता तक पहुंचाने का अधिकार होता है जो कॉपीराइट लेता है उसमें। यह एक प्रकार से बौद्धिक संपदा का अधिकार है। कॉपीराइट
पंजीकरण होने के बाद ये कॉपीराइट अलग अलग मामलों में अलग अलग वर्षों का भेद रहता है। जैसे किसी लेखक के मामले में उसने पुस्तक लिखी है, कोई लेख लिखा है, कोई व्याख्यान किया, वो कॉपीराइट उसके जीवन काल तक तो वैध रहता ही है, बल्कि उसकी लेखक की मृत्यु के बाद 60 साल तक भी मान्य रहता है। इसी तरह संगीत के मामले में अलग अवधि है, फोटो के मामले में अलग अवधि है, कलाकार की किसी प्रस्तुति की कॉपीराइट है उसकी अलग अवधि है इसकी वैधता की। और कॉपीराइट में क्या क्या चीजें आती है ये भी हमको जानना चाहिए। कोई भी किसी भी लेख उसका लेखक कॉपीराइट ले सकता है, पुस्तक पे लिया जा सकता है, व्याख्यान किसी विद्वान ने दिया है व्याख्यान पे लिया जा सकता है, विज्ञापन पे कॉपीराइट लिया जा सकता है, वीडियो पे बनाया है वो ले सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे कॉपीराइट लिया जा सकता है, किसी भी फोटो पे आपने खींचा है उस पर भी कॉपीराइट ले सकते हैं, ब्लॉग लिखा है अपने सोशल मीडिया पे उस पर ले सकते हैं, यूट्यूब पे आपने कुछ सामग्री डाली उस पर लिया जा सकता है, फिल्म पे लिया जा सकता है, धारावाहिक पर, संगीत पर, नाटक पर, टीवी शो पर, ऑनलाइन वीडियो पर, पेंटिंग पर, पोस्टर पर या किसी भी कलात्मक काम पे कॉपीराइट पंजीयन किया जा सकता है। यानी जिस चीज को पढ़ा जा सके, सुना जा सके, देखा जा सके और जो भौतिक रूप से है इन सब पर कॉपीराइट लिया जा सकता है। ऐसी दृश्य श्रव्य और लिखित सामग्री का सृजन करने वाला यानी उसकी रचना करने वाला व्यक्ति या संस्था ही कॉपीराइट प्राप्त करने के पात्र होते हैं, अधिकारी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मित्र ने आपकी फोटो खींची और उसका उससे कॉपीराइट लिया, तो आपकी अनुमति बिना तो आपकी फोटो है, आपकी इंस्टा किसमें आती है, तो आपकी अनुमति बिना तो सकती है, लेकिन उसको कॉपीराइट लिया तो उस फोटो का उपयोग उस कॉपीराइट लेने वाले की अनुमति बिना आप नहीं कर सकते, मतलब वो आपका है। ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसने कॉपीराइट ले रखा है उसकी बिना पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट वाली सामग्री का उपयोग नहीं कर सकती है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माने का और 3 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। यह कानून जवाबदेही की गंभीर अनदेखी के तहत आने वाला अपराध है, कानूनी जवाबदेही की गंभीर अपराध की अनदेखी। इसीलिए कॉपीराइट उल्लंघन के जितने मामले न्यायालय में जाते हैं उनमें फैसले करते समय कोर्ट ये नहीं देखता है कि उल्लंघन जानबूझकर किया गया है या अनजाने में किया गया। भारतीय कॉपीराइट कानून के प्रावधानों का सम्मान करते हुए आरटीआई की धारा में भी यह प्रावधान किया गया है कि कॉपीराइट यानी प्रतिलिपि करने के अधिकार के दायरे में आने वाली सामग्री आरटीआई में मांगे जाने पर नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि कॉपीराइट का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति और संस्था के पास उस सामग्री या कंटेंट का इस्तेमाल करने का विशेष अधिकार होता है। यह अधिकार मौलिक सृजन करता है या मौलिक रचना करने वाले को भी मिलता है।